अब से ठीक 30 मिनट बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं और ये जो बजट है वो कई मायनों में एक बहुत ही क्रिटिकल बजट होने वाला है देश के लिए। एक तरफ इंडियन इकोनॉमी ट्रेड वॉर, ट्रेड डील्स, टैरिफ्स, इनसे जुड़े चैलेंजेस को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एफएम के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो देश का ग्रोथ इंजन है वो कहीं से भी ठंडा ना पड़ने पाए। और इन सब के बीच में हर साल की तरह इस साल भी जो देश का सैलरी क्लास है, मिडिल क्लास है, वो एक उम्मीद लगाए बैठा है कि हो सकता है लास्ट ईयर की तरह इस साल भी एफएम किसी तरीके की टैक्स रिलीफ दे दे तो बस मज़ा ही आ जाए। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे हैं, विश लिस्ट लंबी है। इंडिया इंक बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा है, कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा, कौन से सेक्टर्स को वेट करना पड़ेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरी सिंह एंड वेलकम टू अपस्टॉक्स लाइव बजट कवरेज, जहां पर हम बजट को सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, ताकि आप जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को रियल टाइम में आपको इंसाइट्स मिल सके, एक्शनेबल इन्फो मिल सके। और इसके लिए मेरे साथ एक ज़बरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। वी हैव मिस्टर अनुज जैन फ्रॉम ग्रीन पोर्टफोलियो, ही इज़ द को फाउंडर ऑफ द कंपनी, एंड ऑल्सो मिलन भविष्य डायरेक्टर एट अपस्टॉक्स एंड ऑल्सो आर इन हाउस मार्केट एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग मिलन, गुड मॉर्निंग अनुज, वेलकम टू द शो। मिलन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मार्केट्स के बारे में बात करके। आज संडे है बट बिकॉज बजट डे है इसलिए बाजार खुले हुए हैं और हमने सुबह ही से देखा कि कैसे एक तो रेड में खुले और दूसरी बात अब फ्लैट चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। टिपिकल ऑफ बजट डे। या यूजुअली ऐसा होता है, बजट के पहले थोड़ी शांति होती है और उसके बाद देयर इज़ अ स्टॉर्म। बट अगर इस महीने की बात करें, स्पेशली आई मीन जनवरी की बात करें, तो मार्केट्स वेयर डाउन अबाउट 3%। बट मोर रिसेंटली एक टेक्निकल एंगल से देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज से का सपोर्ट लेके मार्केट ने एक बाउंस अप किया है। FI स्टिल नेट सेलर्स, सो वो एक चैलेंज है मार्केट के लिए, बट एनी इम्प्रूवमेंट इन USD INR सिचुएशन कैन ब्रिंग सम रिस्पाइट। ओवरऑल macros are broadly good. We are expecting GDP growth of 7%, fiscal deficit reasonable. तो देखते हैं बजट में क्या आता है, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑटो इज़ द टॉप गेनर विद अबाउट 0.9% राइज और निफ्टी मेटल टॉप लूज़र है इस समय, नियरली 2% का फॉल दिखाई दे रहा है। हम बजट को ट्रैक करेंगे और साथ साथ मार्केट्स का जो मूवमेंट है वो भी ट्रैक करते रहेंगे। अब चलते हैं अनुज के पास। अनुज, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी बोला था कि एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है टैक्स रिलीफ को लेकर और ये हर साल रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपेंड इन द कंट्री और व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। सो यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखने वाली वो है कि लास्ट ईयर एफएम ने एक बड़ा टैक्स रिलीफ दिया था, उसके बाद GST कट्स भी हुए थे। क्या इन सब के बाद भी इस साल कोई टैक्स रिलीफ उम्मीद रखना क्या सही है, नहीं है? I think if the government chooses to come up with a populist budget in this budget, that would be very foolish on our part, because जो geopolitical situation इतना fluid है and this is a make or break kind of a budget. Even COVID के बाद जो announcement थे या budget थे, that was not that important for the economy, जो कि आज की डेट में geopolitical duty actions और इन सब के कारण है, because on the one side you are sitting on an immense opportunity from where you can scale up like anything, and on the other side इतना बड़ा threat है, चाहे वो क्रूड की साइड में हो, चाहे वो US एक्शंस की साइड में हो. So basically this budget has to be a budget that focuses on growth. No populist measure I expect. I wish there is no populist measures. It should be purely on budget, purely on growth and purely on capex. एक रेडिकल प्रोपोजिशन है, टैक्स घटने के चांसेस कम है, पर क्या टैक्स बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं? एंटी पॉपुलिस्ट भी नहीं होगा बजट। एक टैक्सेस से जुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट देखने को मिला इकोनॉमिक सर्वे में, इनफैक्ट, जिसमें कहा गया कि सरकार का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 59% हिस्सा डायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है, यानी कि पर्सनल टैक्सेस, कैपिटल गेन्स टैक्सेस, जो कि 2020 में सिर्फ 52% था। तो ये बजट 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि जो ओवरऑल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज़ है वो स्लो भी पड़ते हैं, फिर भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस से एक सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है। तो चांसेस है कि पर्सनल टैक्सेशन में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। मिलन, वो टैक्सेस जिनके बारे में मार्केट्स बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं वो है कैपिटल गेन्स टैक्सेस। लोगों को उम्मीद है कि इस बार शायद उसमें ट्वीक देखने को मिल सकता है। लास्ट 2024 में चेंज हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उम्मीद है मार्केट्स को इस बार। सो सी गौरी, कैसा है कि सीधी बात है, अगर टैक्स कम होते हैं तो एवरीबडी लाइक्स इट एंड इट गिव्स यू मोर मनी इन योर हैंड, बट
hopes are being built around some cut in capital gains tax या Yes. फिर STT especially for the market participants. But इस टाइम पे कैसा है कि अगर आप देखो तो geopolitics is at next level, Yes, that kind yes. of uncertainty is at next level. साथ ही साथ ये जो recently meltdown दिखा है गोल्ड एंड सिल्वर में, तो ऐसे पॉइंट पे अगर थोड़ा भी कोई टैक्स कट आता है कहीं पे भी कैपिटल गेन्स या STT में, इट विल एक्ट लाइक अ सेंटीमेंट बूस्टर. यस यस ऑफ कोर्स. और जब कैपिटल गेंस टैक्सेस की बात हो रही है तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि लास्ट ईयर एक तो काफ़ी ठंडा रहा रिटर्न्स के मामले में, और दूसरा बड़ा रीज़न है FIIs को मार्केट में वापस लाना है, तो उसके लिए भी शायद कैपिटल गेंस ट्वीक्स को यूज़ किया जा सकता है. आई थिंक डिफिकल्ट हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा, रीज़न बिंग कि दे वेरी रिसेंटली डिड चेंजेस इन कैपिटल गेन टैक्स. नाउ बैक ट्रैकिंग just after 1 year of underperformance in the stock market does not give a strong signal. So basically I think that is unlikely in my eyes, but what is likely is कि जो LTCG का exemption limit है उसको बढ़ा के significantly बढ़ाया जा सकता है. That is a low hanging fruit for them and that is kind of populist as well. राइट अगर मान लीजिए कि कैपिटल गेंस टैक्सेस में ट्वीक होते भी हैं, चेंजेस हो भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक लौता फैक्टर होगा जो कि एक सस्टेन रैली दे सके मार्केट्स को, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स एट प्ले होते हैं व्हेन इट कम्स टू मार्केट्स. आई एम श्योर आपको पता ही है इस बारे में. अनुज, एक और जनरल परसेप्शन है इस बजट को लेकर कि ये अभी तक का शायद मोस्ट ट्रेड कॉन्शियस बजट होने वाला है, जिसका जिक्र आपने किया था, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स, ट्रेड डील्स, ट्रेड वॉर्स. तो इन सब को अगर हम मद्देनज़र रखें तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है वो बहुत टफ हो जाती है हर कंट्री के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. हम लोग यहाँ टीवी पे बैठ के कुछ भी बोलते रहे, बट जब फाइनेंस मिनिस्टर के पास प्रपोजिशंस आते होंगे, प्रपोजल्स आते होंगे, तो आप किसी प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम करेंगे तो किसी को फ़ायदा होगा, बट सम अदर इंडस्ट्री विल लूज फ्रॉम दैट, है ना. तो मतलब इट्स नॉट ईजी फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री पीपल टू मेक अ बजट दैट मेक्स एवरीवन हैप्पी, है ना. सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर श्योर. सो बट दिस हैज़ टू बी अ ग्रोथ सेंट्रिक बजट एंड गिवन द सिचुएशन वी आर इन currently. I think I am expecting this will be heavy on capex and it will instigate further investment, private investment, maybe in the form of PLI schemes, expanding the scope of PLI schemes, or maybe capital subsidy in select sector. For example, we did in semiconductor recently. मेरे ख्याल से जो आम आदमी है वो कुछ और ही देखे, क्रिकेट वगैरह तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आज के बजट में. एक और चीज़ है, एक उम्मीद है एक्चुअली इंडिया इंक को कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं हो सकता है उनको एक क्वेश्चन दे दें या सपोर्ट दे दें फाइनेंस मिनिस्टर इस बार, बिकॉज दे हैव बीन हिट बाय टैरिफ्स. दो उन्होंने रेजिलियंस दिखाया है मगर असर तो है ही. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो मैं पहले आपको कह रहा था कि मतलब यू कैन प्ले इट आइदर टू विन द गेम और टू कम फर्स्ट, और यू कैन प्ले इट टू बी ऑन द लास्ट. तो मतलब बीच का लेवल नहीं है कोई. आप ऐसा बजट ला सकते हो कि आप EU ट्रेड डील को मैक्सिमाइज उसको वो कर सको और US ड्यूटी इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सको इम्पैक्ट को, या तो आप ऐसा बजट ले आओ, या आप ऐसा बजट ले आओ कि बॉस सारा इंडस्ट्री बैठ जाएगा और वो पॉपुलिस्ट बजट होगा एंड एवरीबडी, आपका वोट बैंक सिक्योर होगा बट द इकोनॉमी विल गो टू डोलड्रम. राइट. इवन इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत ही खास बात कही गई है कि जो भी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, वंस दे आर लॉस्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर देम. तो ये एक चीज़ है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ज़रूर ध्यान में रखेंगी वाइल फॉर्मुलेटिंग ऑल द पॉलिसीज़, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ एंड सेक्टर्स. ट्रेड वॉर्स के बीच में अनुज एक इंडस्ट्री जिसका कि अक्सर नाम आता रहता है, जिस पर चर्चा होती रहती है, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर. क्योंकि एक तो ये सेक्टर वैसे ही काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, हर दिन कोई एक फैक्टर नया रहता है जो कि एक रोल प्ले करता है. उन सब के बीच में अब ऑयल पॉलिसी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, उसमें अनसर्टेनिटी है. सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग डू यू थिंक कि इस बजट से एक्सपेक्ट कर सकता है ये सेक्टर? I think what is fair to expect on oil and gas side is reforms in policy. I mean policy आज भी बहुत वेग है, बहुत ही पूरे प्रोसेस को स्लो करने वाली है. फॉर एग्जांपल ऑल द ऑयल फील्ड दैट वेयर ऑयल डिस्कवरी हैज़ बीन डन, कोई मेजर प्रोडक्शन में नहीं आता दिखाई देता है आने वाले टाइम में. मतलब जिन ऑयल फील्ड्स में 5-7 साल पहले डिस्कवरी हो गया था उनका भी प्रोडक्शन अभी कहीं पे मतलब इट इज़ नो वेयर क्लोज टू बिकमिंग रियलिटी. एंड वी आर 85% इम्पोर्टिंग क्रूड एंड गैस फ्राम वी आर इम्पोर्टिंग कंट्री. तो बेसिकली रेडिकल चेंजेस की ज़रूरत है. मतलब 5-10% का
इंक्रीमेंट चेंजेस करके आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग. सो पॉलिसी इज समथिंग वेयर द गवर्नमेंट कैन हिट हार्ड, क्योंकि रिसेंट में भी कई सारे हमने अनाउंसमेंट देखे. इवन जो रेयर अर्थ मिनरल है उनकी डिस्कवरीज हुई हैं कंट्री में. अंडमान में बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस ब्लॉक डिस्कवर हुआ है. तो कैसे उसको एक्सपेडाइट तरीके से हम प्रोडक्शन में लेके आ सके, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि आज अगर हम इंडिया एज अ कंट्री, इफ़ somebody can blackmail us, that is only through oil. Yes. Otherwise roti kapda makan तीनों हमारे पास है, बस तेल नहीं है हमारे पास. So basically this is something where we need a radical 180 degree turnaround. यस, तेल एक तो है नहीं और कहाँ से लेना है उसको लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन बना रहता है. मिलन, अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की हम बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो फेवर किया जाता है उन ट्रेडर्स और उन इन्वेस्टर्स द्वारा जो कि शॉर्ट टर्म बेट्स लगाना पसंद करते हैं. जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर रहता है, हर दिन कुछ चेंजेस होते रहते हैं, डिविडेंड फ्रेंडली भी होता है ये काफ़ी. जो यहाँ के जो स्टॉक्स होते हैं, आई एम श्योर अगर आज बजट में इससे जुड़ा कुछ अनाउंसमेंट होता है तो एक ट्रिगर मिल सकता है जितने भी ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको. सो गौरी, कैसा है, अगर पहले कमोडिटी की बात करें तो एट दिस पॉइंट इफ़ यू सी बेस मेटल्स में क्रैश आ रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर में ऑलरेडी क्रैश दिख चुका है. और ऐसे सिनेरियो में अगर एक कोई कमोडिटी है जो उभर के आ रही है जिससे उम्मीद है, वो है क्रूड ऑयल. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि ऑलरेडी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स है वहाँ पे मूवमेंट दिखना शुरू हो चुका है. और ऐसा कोई अगर टैक्स में रिलैक्सेशन आता है तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर है बहुत टाइम से साइडवेज था, यहाँ पे ब्रेकआउट की एक उम्मीद है फ्रॉम टेक्निकल सेटअप एंगल. राइट. और एक चीज़ जो हमें ध्यान देना है कि अभी जो ट्रेड डायनामिक्स हैं, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है जियोपॉलिटिकली, आई थिंक एक चीज़ अच्छी हुई है इंडिया के लिए कि जो हमारा विजन था आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का, वो एक विजन तो था, अब उसमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ऐड हो गई है. राइट. क्योंकि अब पता है गवर्नमेंट को कि ये करना बेहद ज़रूरी हो गया है, ये लॉन्ग टर्म नहीं एक शॉर्ट टर्म प्लान बनने वाला है. अगर हम बात करें पिछले बजट की तो हमने देखा था कि एक मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ का विजन FM ने दिखाया था. अराउंड 11.21 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेट हुआ था. मगर अब इस सेल्फ रिलायंस पुश को एक फायर पावर चाहिए, हम कह सकते हैं. राइट. इसीलिए कैपिटल गुड्स सेक्टर को या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इनको स्पेसिफिकली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बजट से? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग पुश बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली कैपिटल गुड सेक्टर विल बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग. Plus, the opportunity size is really huge after deal with EU, because EU is a very big market. I mean, it can compensate the loss from the US duty action, even though there is no loss right now, as if nothing is visible as on date. But you know, that is why I am saying कि opportunity is really huge. So if we play it right, तो capital goods sector, मतलब we have the potential. जो अपने countries की बड़ी कंपनियां हैं, even छोटी small companies, they are doing export. They have established relationship with buyers in Europe and America. So basically the government, what government can do is government can give a thrust, can stand behind them. उनको push दे सकती है कि बॉस आप export करो, हम आपके साथ हैं, there will be no problem. For example, there are so many, I mean हर चीज़ के लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. There are so many things you can do without even spending money. For example, policy reforms. For example, regulations को smoothen करना. For example, bureaucracy को frictionless बनाना. तो ये सब चीज़ें आप कीजिए तो मे बी देर आर मैनी इंडस्ट्री विच आर नॉट सीकिंग मनी फ्रॉम यू, है ना. वो लोग बस ये चाहते हैं कि यार हम कर लेंगे, यू जस्ट गिव अस, आप हमारे रास्ते को साफ रखो, यू जस्ट क्लियर आवर वे, हमारे सामने ब्यूरोक्रेसी नहीं आना चाहिए, वी आर कम्पिटिटिव. एग्जीक्यूशन को even before EU deal, our textile industry, our so many industries were competitive in EU. मतलब वो 15-20% ड्यूटी पे करके बांग्लादेश से कम्पीट कर रहे थे ऑलरेडी. तो अब आप सोचो कि हमारे को कितना एडवांटेज हो गया. नाउ ऑल गवर्नमेंट हैज टू डू इज टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट. सॉरी. यस. मिलन, वहीं पर बात आ जाती है कि अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो ज़रूर अगर कोई बजट में अनाउंसमेंट आता है तो एक ट्रिगर देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें. बट इन्वेस्टर या ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन मीडियम टर्म या फिर लॉन्गर टर्म व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज सिर्फ अनाउंसमेंट से काम नहीं चलता. जैसा कि अनुज ने भी बोला कि एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है, डिलीवरी टाइमलाइंस बहुत मायने रखती है, तो वो सब भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. सो गौरी, कैसा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग और स्पेसिफिक उसमें जाए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है या सेमीकंडक्टर्स है, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज सेमीकंडक्टर्स आर अ नीड ऑफ एन आवर, बट इनके रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो मल्टी मंथ करेक्शन या कंसोलिडेशन में चल रहा है.
अब यहाँ पे अगर कोई फ्रेश PLI 2.0 अगर आ जाता है या ऐसी कोई फैब्रिकेशन रिलेटेड क्लैरिटी आ जाती है तो ये सेक्टर को एक अभी जो करेक्शन मोड चल रहा है उसमें से ये सेक्टर भी बाहर आ सकता है. सो ये टिपिकली ऐसे खिलाड़ी है जो डाउन हो गए बट आउट नहीं हुए हैं. ओके ओके, तो ये एक पॉजिटिव टेक अवे है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आउट देयर. अनुज, जैसा कि मिलन ने भी जिक्र किया कि सेमीकंडक्टर एक इंडस्ट्री है जिस पे बहुत ही ज़्यादा बज़ है. हमने पिछले साल देखा और इनफैक्ट उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दिखा रहे हैं. लास्ट बजट में अराउंड 7,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेशन हुआ था, 83% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर. तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से इंटेंशन तो दिखा दिया है लास्ट बजट में कि हाँ, सेमीकंडक्टर इज़ अ सीरियस कंसर्न, नॉट प्रायोरिटी एक्चुअली फॉर देम. एंड बट अब इस साल शायद फोकस एग्जीक्यूशन पर रखना ज़्यादा ज़रूरी है. जैसा कि आपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बात की, तो आई थिंक सेमीकंडक्टर की भी ऑन द सेम लाइंस एक्सपेक्टेशंस होने वाली है. So, as far as I understand about the semiconductors, current year में we will have 2 commercially operational plant in India. Yes, yes. ठीक है, मतलब यू कैन आर्ग्यू कि भाई वर्ल्ड इज़ वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ 2 nm सेमीकंडक्टर एंड वी आर प्रोड्यूसिंग 28 nm सेमीकंडक्टर. बट आपको लंबा जर्नी ट्रैवल करना है तो पहला कदम आपका 1.5 फीट का ही होगा, चाहे आप छोटा जर्नी ट्रैवल करो या लंबा करो. इट विल बी ऑलवेज 1.5 feet स्टेप. ओके, सो वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप. Okay, so with the commissioning of first plant, it will be a new journey of India on the semiconductor front. Now, again, the government has to act as a catalyst. They have to act as a lubricant. तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में एक इंडस्ट्री जो प्रॉब्लम फेस करती है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की लैक ऑफ क्लैरिटी इन इनकम टैक्स को लेकर फेस करती है. तो वो क्या होता है, वो दैट गिव्स अ राइट टू द असेसमेंट अथॉरिटी टू क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स, इनकम टैक्स डिमांड्स. सो बेसिकली ये सब इन सब चीज़ों को अगर हम क्लैरिफाई करके चलेंगे ना, देन आई थिंक द ग्राउंड इज सेट फॉर अ मैसिव रैली इन द इकोनॉमी एंड हैंस इन द स्टॉक मार्केट. राइट. मिलन, लास्ट ईयर हमने देखा था जो सेमीकंडक्टर्स से जुड़े हुए स्टॉक्स थे उनमें अच्छा खासा बस था. राइट फ्रॉम BEL, डिक्सन, CG पावर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स, नो रिकमेंडेशंस ऑफ कोर्स. बट इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि इस बजट से कुछ सॉलिड निकल के आए, क्योंकि अभी तो जो रैली चल रही है या जो एक बस चल रहा है वो ऑप्टिमिज्म पर ज़्यादा है, पोटेंशियल पर ज़्यादा बेस्ड है. सो जैसे मैंने बताया PLI 2.0 या कुछ ऐसी क्लैरिटी आए सेक्टर रिलेटेड जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईज आउट हो जाए, इंपोर्ट्स ऑफ मटेरियल इज़ रिलेटिवली इजी. सो जो आपने स्टॉक्स बताए वो टिपिकली वेट कर रहे ऐसी कोई ब्रेकआउट के लिए. इनमें जो इतना करेक्शन आ चुका है मल्टी मंथ, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का करेक्शन है, बट मल्टी मंथ करेक्शन है, उनसे ब्रेकआउट के लिए एक ट्रिगर चाहिए यहाँ पे. राइट. अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें और इंटरनल सेमीकंडक्टर डिमांड की बात करें तो अगले 5 सालों में ग्लोबल कंजम्पशन का 10% इंडिया से आने वाला है. मतलब कि सेमीकंडक्टर से जुड़ी जो कंपनीज हैं उनके लिए मैसिव हेडरूम है यहाँ पर. सपोर्ट कितना मिलता है बजट से वो देखने वाली बात होगी. अनुज, एक और इंडस्ट्री जो कि सेमीकंडक्टर से क्लोजली जुड़ी हुई है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और अगेन एक बहुत ही बजिंग टर्म है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. लास्ट कुछ महीनों में हमने देखा है बहुत सारे बड़े टेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल, इन सब ने प्रॉमिस किया है बड़े इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में टू बिल्ड क्लाउड एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर. ये एक पॉजिटिव सिग्नल है ऑफ कोर्स, बट केवल हार्डवेयर पे तो बात नहीं रुक सकती. हमें थोड़ा स्किलिंग एंड इवन अडॉप्शन, इन सब पर भी ध्यान देना होगा. या इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि गवर्नमेंट उसको AI को कैसे एड्रेस करती है, क्योंकि मतलब हम लोग जैसे US स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो AI बेस्ड जो कंपनी है, चाहे वो पैसिवली हो चाहे वो एक्टिवली हो, you can see the valuation of those companies. मतलब $1 trillion is I don't know how many companies run at $1 trillion kind of a valuation. In fact, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बात की गई है जहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही मगर इस AI बबल की तरफ इशारा किया है. सो फॉर देम इट माइट बी AI बबल, बट फॉर अस हम तो स्टार्ट ही कर रहे हैं. ठीक है, तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द गवर्नमेंट एड्रेसेस दैट. अश्विनी वैष्णव हैज़ ऑलरेडी said in some press conference or something that we will launch our own AI. I don't understand the technology behind it. But I think models. Yeah, if model. I'm not Our wrong, own AI model yeah. very soon in some international conference. So let us see what where we are in terms of AI. But yes, the government, what government can do in this budget is spend on R&D. R&D includes AI, etc. as well. Because reason being, we lag far behind. For example, China is spending, if I'm not wrong, 2.6% of their GDP on R&D, and we are spending like 0.4% of our GDP on R&D. And
I don't know about the quality of R&D that we are spending on. And, so basically, R&D is something that would include to a large extent AI and upcoming tech as well. So R&D is something to watch out for in the budget. राइट मिलन, एक और सेक्टर जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है डिफेंस सेक्टर। ये जो बजट से पहले वाला वीक था उसमें एक अच्छी खासी रैली दिखाई है डिफेंस स्टॉक्स ने। जाहिर है मार्केट को लग रहा है कि कुछ फायरवर्क्स हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सेक्टर इन द बजट। सो गौरी, हम जो अभी जिस ईरा में है, ट्रेड वॉर्स के ईरा में, ऐसे ईरा में डिफेंस बजट को कट करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बट ऑब्वियसली ईच कंट्री वुड बी लुकिंग एट इंक्रीजिंग देयर डिफेंस स्पेंड्स नाउ। सो डेफिनेटली डिफेंस इज अ फोकस एरिया फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 years। और अगर टेक्निकल सेटअप से भी देखें तो ये सारे स्टॉक्स हायर हाई हायर लोज बना रहे हैं, तो डेफिनेटली नियर टर्म वोलेटिलिटी रहेगी, बट स्ट्रक्चरल ट्रेंड इनका अप है। राइट अनुज, इस डिफेंस स्टॉक्स को लेकर जो ऑप्टिमिज्म है उसमें ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक नैरेटिव शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स की ओर, तो आई थिंक उसको और पुश देने की भी कोशिश होगी बजट में। यस डेफिनेटली, आई मीन फाइनेंस सेक्रेटरी का आई थिंक बयान था कि 20% के आसपास, डिफेंस सेक्रेटरी का आई थिंक 20% के आसपास डिफेंस बजट में इंक्रीज दे आर एक्सपेक्टिंग। एंड डिफेंस बजट के इंक्रीज को भी आप देखोगे ना तो थोड़ा आप देखना कि अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ फोकस बढ़ रहा है। तो बेसिकली जितना डिफेंस बजट बढ़ेगा उसका इंक्रीमेंटल प्रोपोर्शन विल गो टू प्राइवेट सेक्टर। तो मतलब इवन जो प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट BEL या गवर्नमेंट एंटिटीज़ HL वगैरह कर रही है, उसमें भी जो सब सिस्टम्स वगैरह की सप्लाई है वो प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैम। तो अगर उनकी वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इफ़ यू रीड इन टू दोज डिटेल्स देन दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। इवन इन ऑपरेशन सिंदूर सो मैनी missile system etc from supplied by the private sector were used successfully in them. Yes. So that is something really interesting, and I think there will be a thrust in the budget as well on the private sector to capitalize on that. Yes. 100%। मिलन, रेलवे स्टॉक्स की भी हमें बात करनी होगी। तो एक नॉर्म देखा गया है कि हमेशा बजट से पहले एक रैली देखने को मिलती है रेलवे स्टॉक्स में, बट इस बार ठंडा ही रहा रेलवे स्टॉक्स। इनफैक्ट पूरे साल की अगर हम बात करें पिछले बजट से इस बजट तक बहुत ही म्यूटेड रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को रेलवे स्टॉक्स ने। तो थोड़ा सा एक बीच में स्पाइक भी आया था, बट आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ फेयर हाइक। तो शायद इस समय जो केपेक्स का अगर मान लीजिए अनाउंसमेंट होता भी है तो वो भी शायद मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस इन कर लिया है। No, I don't think so. In fact, रेलवे स्टॉक्स में कैसे हुआ था, बिटवीन 22 to 24 देयर वाज अ मैसिव रैली, और उसके बाद ये सारे स्टॉक्स टाइम और प्राइस करेक्शन में चले गए। नाउ अगर फ्रेश कैपेक्स आता है तो अगेन दिस विल गिव अ फ्रेश लेग ऑफ रन, नेक्स्ट अप रन इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। ओके अनुज, रेलवेज मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेक्टर्स है इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि आप मान लीजिए एक भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या अनाउंस होता है बजट में तो उससे कितने सारे सबसेट्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं, राइट। अगर आप नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो नया सिग्नलिंग सिस्टम चाहिए, नया ट्रैक सिस्टम चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कोई भी अनाउंसमेंट अगर होता है बजट में रेलवेज को लेकर, कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ट्रैक करने के लिए। Yes, railway is a very good theme to play. Again, I mean, I cannot name any share, but railway definitely is a very, at least a decade-long theme to play in stock market right now. And including as well as infra as well. आपने एक चीज़ और रेलवे में मिस कर दिया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस होगा तो उसका EPC भी बहुत बड़ा होता है, मतलब अराउंड 40% वुड गो टू द EPC कंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना। सो इतने सारे सेगमेंट उसमें अफेक्ट होंगे, मतलब immense. So it is a massive opportunity, and I think there will be immense focus on railway and infra in the budget. राइट अब से बस कुछ ही देर में फिनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच शुरू करने वाली है। 2 मिनट रह गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई कांट एंड दिस डिस्कशन विदाउट टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बिना हम लोग ये डिस्कशन एंड नहीं कर सकते। इक्विटीज से स्पॉटलाइट छीन ली है इन दोनों ने इस वक्त। आज भी हमने देखा है कि काफ़ी एक्शन दिखाई दे रहा है दोनों कमोडिटीज़ में, और MCX भी ओपन है बाय द वे आज अलॉन्ग विद निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो अगर बजट में कस्टम्स ड्यूटी को लेकर कोई अनाउंसमेंट होता है तो वो एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। कैसे है कि गोल्ड और सिल्वर पहले हाई जंप कर रहे थे और फ्राइडे को उन्होंने बंजी जंप कर दिया है। सो एनी काइंड ऑफ चेंज इन कस्टम ड्यूटी विल ब्रिंग फर्दर वोलेटिलिटी टू द प्राइसेस। ऑलरेडी लॉट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, बट इट विल ऐड टू द वोलेटिलिटी।
कस्टम्स ड्यूटी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे आई हैं? थिंक कस्टम ड्यूटी चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी जब गोल्ड में चेंजेस किए तो दैट हैज़ नॉट गिवन द डिजायर्ड रिजल्ट, रादर इट हैज़ बैकफायर्ड. So I think the custom duty change will not bring anything on the table for the government, because right now whatever action we are seeing on gold and silver, it is basically we are the price taker as on date, because वो international level पे dynamics के कारण changes हैं. तो custom duty will not help them, but definitely the government should introspect as to what went wrong in sovereign gold bond, because when they issued the bond, it is not backed by the real gold, tangible gold. So now they are they are taking the loss when redeeming those bonds. Right. So the next, but it's a good product. So basically they can come up with a new product, something like that, which can capture the upside, protect the interest of the government as well at the time of redemption, and at the same time reduce the dependence on import on as far as gold and silver are concerned. राइट. अब से बस कुछ ही सेकंड्स बाद फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंच जाएंगी और अपनी स्पीच, बजट स्पीच को शुरू करेंगी. और जितने भी विश लिस्ट और एक्सपेक्टेशंस की हमने बात की, उस पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो फाइनली ओवर हो जाएगा. हम आपको वो स्पीच लाइव तो दिखाएंगे ही, और उसके बाद तुरंत बाद हम यहाँ पर वापस लौटेंगे अपने पोस्ट बजट एनालिसिस के साथ. ये एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे. और ख़ास बात ये है कि बजट से जुड़े अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. मैं कमेंट्स लगातार आपके मॉनिटर कर रही हूं, और ये जो सवाल हैं वो डायरेक्टली हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे. जस्ट एक चीज़ मैं एक राइडर दे दूं कि हम कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी स्पेसिफिकली नहीं एड्रेस कर सकते, बिकॉज वी आर बाउंड बाय रूल्स. कोई रिकमेंडेशंस आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, मगर हाँ, उसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई कंसर्न है, तो वो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हम लगातार उनको एड्रेस करते रहेंगे. बस कुछ ही सेकंड्स दूर है एफएम की ये स्पीच, एक बहुत ही हिस्टोरिक स्पीच भी होने वाली है. अनुज, अगर देखा जाए तो 9th कंसेक्यूटिव स्पीच है एफएम निर्मला सीतारमण की ये एज अ फिनेंस मिनिस्टर. सो ऑब्वियसली जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ जाती है. Yeah, I think FM Nirmala Sitharaman was not having a very good reputation as far as middle class is concerned in the beginning years of लास्ट ईयर उन्होंने कॉम्पनसेट करने की कोशिश की. No, she did compensate in a और अगले 4-5 साल का भी वो ले लिया, क्वेश्चन ले लिया उन्होंने. राइट. एफएम आ चुकी है, सुनते हैं उनको सीधा बजट 2026 में. With your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी. Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured
that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation
and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations
as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2, a scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high-value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1, the National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool, and jute, man-made fibers, and new-age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3, the National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom, and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process, and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high-quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design, as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund, set up in 2021, with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential,
I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047.
To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore
the current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector.
These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to, 1, set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2, upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3, upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming, and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding, and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope,
and the Cosmos 2 planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3, bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training,
and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A, a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments.
empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this,
The debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining (25-26). A declining net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of
filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of
books of account and documents, and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing,
I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers
accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports.
Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology
for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये था बजट 2026। सस्पेंस खत्म हो चुका है। जितने भी बड़े अनाउंसमेंट्स थे वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दिए हैं। राइट फ्रॉम केपेक्स टू फिस्कल डेफिसिट टू सेक्टोरल रिलेटेड अनाउंसमेंट्स भी हो गए हैं। अब वक्त है इस बजट को सिंप्लीफाई करने का, आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए एक्शनेबल बनाने का। और इसके लिए हमारा जो पैनल है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। मिस्टर अनुज जैन फ्रॉम ग्रीन पोर्टफोलियो, ही इज द को फाउंडर ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो आर इन हाउस मार्केट एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर कंटेंट एट अपस्टॉक्स, मिलन बाविशी।
आगे बढ़ने से पहले मगर आपको याद दिला दूं कि बजट से जुड़ा हुआ अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हैं। हमारी टीम लगातार उसको मॉनिटर कर रही है और वो क्वेश्चन हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और आंसर लेंगे। सो प्लीज़ कीप कॉमेंटिंग, कीप वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले, एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ हाईलाइट्स बता देती हूँ इस पूरे बजट का, अगर इन केस आप पूरा स्पीच नहीं सुन पाए हैं तो टॉप 10 अगर अनाउंसमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो बात होगी केपेक्स की। गवर्नमेंट केपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। फिस्कल डेफिसिट 4.4% है, टारगेट के हिसाब से है। बोरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपीस है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि इंफ्रा पुश जो उनका फोकस है कई सालों से वो बना रहेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि हमने प्री बजट एनालिसिस में भी बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग पे एक बड़ा फोकस रह सकता है, तो वो देखने को मिला है बजट में। इलेक्ट्रॉनिक्स आउटले 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंफ्रा इक्विपमेंट स्कीम भी है, मतलब कि साफ है कि गवर्नमेंट डबल डाउन कर रही है व्हेन इट कम्स टू मेक इन इंडिया। फार्मा और बायोटेक को एक बड़ा बूस्ट मिला है। 10,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है टू बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम ओवर 5 ईयर्स। IT सेक्टर को एक अच्छी राहत मिली है, कंप्लायंस से जुड़ी राहत मिली है। ऑल IT सर्विसेज विल बी क्लब्ड एंड सेफ हार्बर 15.5% कर दिया गया। थ्रेश होल्ड इज 2,000 करोड़ रुपीस। रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बज़ चल रहा था बजट से पहले भी, उसकी सप्लाई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी पिछले कुछ महीनों से, उसके लिए भी अनाउंसमेंट्स किए हैं एफएम ने। डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, केमिकल प्लांट्स, ये सब सेटअप करने का प्लान गवर्नमेंट ने सामने रख दिया है। साफ मैसेज है कि चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने का मन बना चुकी है गवर्नमेंट। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड लेबर जॉब्स के बारे में भी एफएम ने बात की है। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम सेटअप किया जाएगा। एक्सपोर्ट फोकस लेबर इंटेंसिव सेक्टर पुश है, यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा MSME से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा अनाउंसमेंट है। 10,000 करोड़ रुपीस का एक फंड है जो कि स्पेसिफिकली SMEs के लिए अनाउंस किया गया है। कैश फ्लो इंप्रूव करने की जरूर कोशिश कर रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट को भी लेकर है कई सारे अनाउंसमेंट्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट किया है एफएम ने। फ्रेट कॉरिडोर, शिप रिपेयर हब्स, तो रेल, लॉजिस्टिक्स, EPC से जुड़ी जो कंपनीज हैं वो फोकस में रह सकती हैं बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट्स मेड इन द बजट। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। STT ऑन फ्यूचर्स हैज़ बीन हाइक टू 0.05%, मतलब कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स की जो कॉस्ट है वो अब ऊपर जा सकती है। इसके बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और पूछेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि FM ने बोली अपनी स्पीच में और क्लियर कर दिया है कि जो ट्रंप के टैरिफ का जो अटैक है उसको शील्ड, उसके लिए एक शील्ड तैयार करनी है इंडियन इकोनॉमी पे, और इसीलिए पर्सनल इंपोर्ट ड्यूटी कट अनाउंस किया गया है फ्रॉम 20 to 10%, मतलब कि कंज्यूमर इंपोर्ट्स अब चीपर हो सकते हैं। ज़रूर एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी एफएम ने देने की कोशिश की है अमिड्स ऑल द केओस रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स एंड ट्रेड। सो अभी हम चलते हैं एनालिसिस पे अपने, और हमारे एक्सपर्ट जैसा कि मैंने बोला कि जुड़े हुए हैं मिस्टर अनुज जैन एंड मिलन सर। तो सबसे पहले अनुज, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपसे लेना चाहूँगी। बजट आ चुका है, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या है? फर्स्ट इम्प्रेशन सेलेक्ट सेक्टर्स के पीछे काफ़ी थ्रस्ट गवर्नमेंट का दिखाई देता है। जैसे बायो फार्मा पे 10,000 करोड़ का जो स्पेंडिंग होने वाला है, और सेमीकंडक्टर मिशन 2 हालांकि ज़्यादा डिटेल बजट में मेंशन नहीं की है, बट दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या डिटेल्स होंगी उसकी। EMS की तरफ थोड़ा इन्वेस्टर्स का रुझान कम हो रहा था। EMS की पीएलआई स्कीम एलोकेशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम 23,000 करोड़ टू 40,000 करोड़ नाउ। रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर, मोर डिटेल विल कम लेटर ऑन, बट आई थिंक उसमें सिंप्लीफाई होगा प्रोसेस, एंड ऑब्वियसली एनवायरनमेंट क्लियरेंस वगैरह ऑटोमेटिक कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा रहने वाला है। केमिकल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब मेन फोकस है। तो बजट इज, देर इज़ नो पॉपुलिस्ट थिंग इन द बजट, बट देर इज़ नो ड्रामेटिक प्रो बिजनेस थिंग एज वेल, बट या बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं है, बट छोटे छोटे स्टेप्स है सेक्टर स्पेसिफिक दैट विल गिव इमेंस, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। बट मिलन, अगर हम मार्केट्स का रिएक्शन देखें तो बीच में एक जंप आया था जब फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, मगर अभी देख रही हूँ 2 से 3% नीचे है निफ्टी और सेंसेक्स। Definitely, Gauri, Nifty is already down 500 points. So clearly, at this point, it seems that market has given it a thumbs down. एंड जहाँ पे कैपिटल मार्केट रिलेटेड चेंजेस है, जैसे आपने बताया STT रिलेटेड हाइक, तो इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली नेगेटिवली रिसीव्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स।
राइट अगर हम केपेक्स की बात करें तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा थी कि कितना बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, कितना पुश रहेगा। 12.2 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है, पिछले साल ये 11.2 लाख करोड़ रुपीस था। तो मैसेज क्लियर है कि गवर्नमेंट की ओर से जो इंफ्रा पुश है वो तो कंटिन्यू रहने वाला है, मतलब कि इंफ्रा, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, इवन रेलवेज, इन सब पे फोकस बना रहेगा। यस एब्सोल्युटली। ये जो बजट में जो इंक्रीज हुआ 11.2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़, दिस कपल्ड विद द पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन द कैपिटल गुड्स फ्रंट, दैट इंक्लूड्स द टूल रूम जो कि गवर्नमेंट सेक्टर एस्टेब्लिश करेगा। सो आई मीन इसको दोनों को एक नज़रिए से देखा जाए तो मतलब इट विल नॉट बी इम्पोर्ट लैड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, आई थिंक इट विल बी मोर, इसका पेनिट्रेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है जो कि विच विल गो इनटू डीपर इनटू कैपिटल गुड सेगमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो बेसिकली दिस इज द हाईलाइट ऑफ द बजट, इफ आई कैन से। ओके, एक और मैसेज जो क्लियरली एफएम ने दिया है अपने बजट स्पीच में वो ये है कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली, बल्कि उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश है। इंडिया वांट्स टू बिल्ड मोर एट होम, ये क्लियर मैसेज है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग आउटले को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नई स्कीम भी आई है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैसेज है कि PLI स्टाइल जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है वो लगातार जारी रहेगा गवर्नमेंट की ओर से, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिफेंस हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, ये सब बेनिफिशरीज रह सकते हैं। या नाउ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, दिस इज अ न्यू एंट्री इनटू PLI, मतलब अभी तक किसी ने एनविसाज नहीं किया था इसको, दिस इज अ न्यू एंट्री। तो PLI बेसिकली गवर्नमेंट के लिए बहुत ही विन विन है, क्योंकि कैपेक्स तो सारा प्राइवेट सेक्टर डाल रहा है, यू हैव टू पे व्हेन दे परफॉर्म, है ना, आपको एडवांस में टेबल पे कुछ नहीं रखना। तो दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी दे हैव अडॉप्टेड। इसमें आप देखिए ना, PLI जो EMS का PLI है 23,000 करोड़ से 40,000 करोड़, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ जंप इट हैज सीन। सो दिस इज़ द हाईलाइट। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को भी सिमिलर टाइप का मुझे लगता है कि इंसेंटिव रहने वाला है, हालांकि एक्सप्रेसली उन्होंने PLI वर्ड यूज़ नहीं किया इसके लिए। तो इंफ्रा प्लस मैन्युफैक्चरिंग देयर इज़ फोकस, मतलब सारे सेक्टर में थोड़ा थोड़ा अनाउंसमेंट है, देयर इज़ नो बिग बैंग थिंग इन द बजट। राइट और जैसा कि आपने कहा सारे सेक्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा है, और खासकर वो सारे सेक्टर्स जिन पर टैरिफ का बहुत असर हुआ था उन पर एक खास फोकस रखा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, इंक्लूडिंग फार्मा को लेकर एक बड़ा बेट दिया गया है ऑन बायोटेक। 10,000 करोड़ रुपए की बायो फार्मा शक्ति प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ है एंड ये आउटले ओवर 5 years होगा। तो फार्मा स्टॉक्स ने तुरंत इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट किया। बायोकॉन हो, सिप्ला हो, लॉरस लैब हो, ये सारों में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया, अपसाइड मूवमेंट देखा गया। बट अभी क्या हाल चल रहा है मिलन? Again, just like any other sector right now, everything is in red. एक मार्केट ने नीजक रिएक्शन तो दे ही दिया है, बट अभी देखते हैं जैसे और क्लैरिटी आती है, इफ़ देयर इज़ एनी फाइन प्रिंट इन द बजट डॉक्यूमेंट, टिल दैट टाइम at this point, it seems that everything is red and people are not happy with, or at least the expectations have not been met. मेरे ख्याल से मिलन इसमें ना मार्केट एक चीज़ को इग्नोर कर रहा है, एक छोटा मतलब बहुत ही ब्रीफली उन्होंने मेंशन किया इस चीज़ को, जो NRI का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में दैट वाज कैप्ड अर्लियर, तो उसमें कैपिंग जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ाई है। आई डोंट नो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, बट हो सकता है कि मार्केट 1-2 दिन में उसको डाइजेस्ट करे एंड इट माइट बी अ सेंटिमेंट रिवर्सल। तो मतलब अभी तो ये दिखाई देता है कि ऑप्शंस का F&O में STT बढ़ा दिया, तो दैट कुड लुक लाइक अ डैम्पनर फॉर नाउ, बट NRI का जो इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटीज़, आई थिंक दैट कैन सी अ रियल जंप गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। राइट, इवन IT सेक्टर को लेकर कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं है, मगर IT सेक्टर जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर्स में से एक रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा भी रही है आफ्टर दी इम्पोजिशन ऑफ US टैरिफ्स। तो कंप्लायंस को लेकर IT सेक्टर के लिए एक अनाउंसमेंट है जहां पर उन्होंने बोला है कि जितने भी इंडिया is recognized as a global leader when it comes to IT, मगर अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, IT enabled सर्विसेज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज, इन सब सेगमेंट्स को क्लब करके एक सिंगल कैटेगरी माना जाएगा एंड दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसके अलावा कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5% will apply to all IT services. Threshold for availing safe harbor has also been increased from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees now. और safe harbor approvals for IT services will be processed via an automated rule-driven system, जिससे कि जो टैक्स ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन की एक ज़रूरत होती थी उसको अब पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो कंप्लायंस साइड पे काफ़ी राहत है IT सेक्टर को।
कंप्लायंस साइड पे काफ़ी राहत है और देर आर सो मेनी अनाउंसमेंट, बहुत सारी तो आई कुड नॉट डाइजेस्ट ऑन अ रियल टाइम बेसिस, बट इट लुक्स लाइक कि कंप्लायंस पे मेजर फोकस रहा है बजट का। आप देखो टैक्स रेट में कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं जी। ठीक है, लेकिन जो कंप्लायंस साइड में जैसे प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज़ वगैरह को फीस के फॉर्म में कन्वर्ट करना या प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस को इवेंट्स को मिनिमाइज करना, दीज अनाउंसमेंट्स वर देयर। आई मीन मोर विल बी डाइजेस्टेड लेटर ऑन, लेकिन या कंप्लायंस वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फोकस। जस्ट एक रिमाइंडर, आगे बढ़ने से पहले अगर बजट से रिलेटेड आपके सवाल हैं, कोई भी कंसर्न्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उसको लगातार मॉनिटर कर रही है और ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसको रियल टाइम में आंसर करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, प्लीज़ पोस्ट इट ऑन कमेंट सेक्शन और तुरंत ही हम उसको एड्रेस करेंगे। अगर हम IT सेक्टर की बात करें मिलन, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक सेक्टर था जो कि लगातार हिट था, स्टॉक्स लगातार एक तरीके से बीटिंग ले रहे थे बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कंप्लायंस साइड से, उसके बाद थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है? Not yet, because extremely beaten down sector है, but एक ऐसे सेक्टर में ध्यान आ सकता है लोगों का, जैसे कंटेनर्स के प्रोडक्शन पे इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा कैपेक्स होगा, तो वो एक पॉकेट है जहाँ पे शायद फ्रेश बाइंग नज़र आ सकती है। बीटन डाउन सेक्टर है बट फ्रेश बाइंग वहाँ पे आ सकती है। एक और बड़ी थीम जो कि उभर के आई है बजट 2026 में, वो है रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स। उसको लेकर बजट से पहले ही काफ़ी चर्चा हो रही थी। जो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स थे उसका असर कैसे इंडियन कंपनीज़ पे हो रहा था, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। उसको भी कहीं एक हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है फाइनेंस मिनिस्टर ने। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स का अनाउंसमेंट हुआ है, 3 केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने की बात की गई है। जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी पूरा का पूरा। तो मैसेज क्लियर है अनुज, अगर देखा जाए तो, कि जो चाइना से जुड़ा रिस्क है व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ, उस पर डिपेंडेंस कम करने की पूरी कोशिश है। Gauri, but I mean, the devil lies in detail. So she has mentioned rare earth corridor, but उसके nuances क्या हैं? Because ultimately जो mining sector का सबसे बड़ा problem है वो है permission, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज और लैंड एक्विजिशन, ये जो इश्यूज़ है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि कॉरिडोर जो होगा रेयर अर्थ मेटल का, दैट विल एक्ट लाइक अ सिंगल विंडो क्लियरेंस काइंड ऑफ अ सिस्टम, की बॉस यहाँ पे आपका ये सारा क्लियरेंस ऑलरेडी अप्रूव्ड है इस कॉरिडोर में। सो इफ दैट रिड्यूसेस द टाइमलाइन बिटवीन फाइंडिंग अ रेयर अर्थ मैटर एंड देन कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग इट, if that reduces the timeline, then it's a really, so execution is the key basically. announcements yes, तो ठीक है, but उसकी फाइनल डिटेल्स क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, दैट इज समथिंग टू बी सीन। राइट, अगर ये सारे फैक्टर्स अलाइन हो जाते हैं मिलन, तो जो PSU माइनर्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, वो लॉन्ग टर्म थीम बन सकते हैं, राइट? सी कैसा है कि इंडिया, आई थिंक एग्जैक्ट आंकड़े तो मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक 90%, मोर देन 90% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर इम्पोर्टेड। तो अगर उस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट होती है, तो अगर ये इम्पोर्ट रेट कम हो सकता है, डेफिनेटली इट विल बी अ बूस्ट टू डोमेस्टिक द एंटायर इकोसिस्टम दैट इज यूजिंग रेयर अर्थ मिनरल्स, वेदर इट इज EVs या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल, एग्जैक्टली, इसमें इवन डिफेंस। आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब गवर्नमेंट अंडर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन, particularly after COVID, I mean, they are not making any lackluster announcement. So when they mention कि भाई rare earth corridor, that means something. They have some plan that is already there. वो अभी आज शाम तक आ जाएगा most likely. Right. So they will make a significant impact. तो ये जो भी corridor आएगा, this will have a significant impact on the entire ecosystem of the mining industry. राइट, एक और सेक्टर जिस पे फोकस रहा है FM का, वो है टेक्सटाइल्स, और टेक्सटाइल स्टॉक्स पे भी ट्रैक्शन देखने को मिला आफ्टर द अनाउंसमेंट्स मेड। लेबर इंटेंसिव सेक्टर पुश है टेक्सटाइल को, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अगेन एक ऐसा सेक्टर था जिसको हिट लगा था आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ। सो गुड न्यूज़ फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एंड और जॉब क्रिएशन नैरेटिव के लिए भी अच्छी खबर है ये। यस, मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये इसमें जो इकोसिस्टम, गवर्नमेंट जो इकोसिस्टम पे काम कर रही है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं इसमें 2-3 चीज़ें मेंशन करूंगा, नॉट ओनली टेक्सटाइल। जैसे गवर्नमेंट ने जो बोला 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल उसको कॉरिडोर्स को वो अपग्रेड करेंगे इंफ्रा वाइज, और जो एक इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि टूल रूम सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सेट करेगी, कपल्ड विद 3 केमिकल पार्क्स एंड मेगा टेक्सटाइल पार्क्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल। सो आप इसको
इंडस्ट्री का डायरेक्शन देखिए कैसे जा रहा है। इंडस्ट्री का डायरेक्शन, एक इंडस्ट्रियल एरिया में मल्टीपल टाइप की इंडस्ट्री है जिसमें से सबको अपना R&D सेंटर, अपना लैब सबको सेपरेटली मेंटेन करना पड़ रहा है, वर्सेज एक डेडिकेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसका सारा R&D, जिसका सारा लैब टेस्टिंग एक सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। तो इफ़ यू सी द कॉस्टिंग ऑफ दैट लैब टेस्टिंग इन बोथ द सिचुएशन, तो जो कॉरिडोर, ये टेक्सटाइल पार्क में जो कॉमन इक्विपमेंट होंगे, कॉमन सर्विसेज होंगी, उसकी जो कॉस्टिंग है दैट विल ड्रास्टिकली मेक अस कॉम्पिटिटिव। सो बेसिकली द डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल वर्डिंग्स। राइट राइट। क्वेश्चंस भी लगातार हमारे व्यूअर्स पोस्ट कर रहे हैं। एक सवाल आया है हमारे व्यूअर का कि हु इज़ द रियल विनर ऑफ दिस बजट, मिडिल क्लास, MSMEs या फिर कॉर्पोरेट्स? अनुज, क्या है आपका पिक? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग आप कहेंगे? Definitely manufacturing, especially areas which are connected to AI, which are connected to semiconductor. क्योंकि कहीं पे भी इतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं नज़र आ रहा है कंपेयर टू जो 40,000 करोड़ का आउटले है सेमीकंडक्टर साइड। तो वो एक पॉकेट है जहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा लोगों का नेक्स्ट एक आध महीने में एटलीस्ट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर पे। राइट। सेमीकंडक्टर्स को लेकर हमने अपने प्री बजट एनालिसिस में भी चर्चा की थी कि कैसे ये एक फोकस रह सकता है, एंड उसी पाथ पे आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, 40,000 करोड़ रुपए का आउटले। क्लियरली एक बूस्ट है सेमीकंडक्टर मिशन को, और ज़रूर गवर्नमेंट ने इंटेंट से आगे बढ़कर अब एग्जीक्यूशन की भी सोचनी शुरू कर दी है, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। लाइक आई सेड, कोविड के बाद एग्जीक्यूशन का स्पीड, मतलब दिस इज़ फिनोमिनल। आप यू जस्ट गो टू द डिटेल ऑफ द न्यूज़। आपके 2 सेमीकंडक्टर प्लांट इस साल में लाइव होने वाले हैं, 2 अगले 1 या 2 साल के अंदर लाइव होने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब उसका सक्सेस देखते हुए सेमीकंडक्टर मिशन 2 जो लॉन्च किया गया, दैट इज़ अ एब्सोल्युटली, आई मीन इट वाज ऑब्वियस टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आप चिंगारी है, धुआं है, आप उसमें तेल डालोगे तो फिर अलग ही आग निकलेगी। तो आई थिंक मौके पे चौका मारा है गवर्नमेंट ने, विच इज़ एब्सोल्युटली Also at this point, if you see, the structure of global economy, every country is going through a difficult phase because of trade wars. और ऐसे point पे, budget में no doubt expectation हमेशा होती है, but एक balanced budget लाना जो growth पे भी focus करे और कहीं इतना भी नेगेटिव, ऑफ कोर्स STT वाज a negative dampener for especially for the capital market participants, but in general I would say market ने ज़्यादा ही react कर दिया initially after the budget, but maybe some sanity will prevail and finer or better aspects of the budget will be unearthed to see के आगे next 1 साल हम कैसे growth path पे वापस on track रहे। राइट, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गिवन द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इन जियोपॉलिटिकली। एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने भेजा है और हमारे रेगुलर व्यूअर ने भेजा है, ओम प्रकाश ओम, जिनका की सवाल है कि फिस्कल डेफिसिट फॉर FY27 एस्टिमेट किया गया है 4.2 to 4.3% ऑफ GDP। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडियन इकॉनमी पे? ये सवाल है ओम प्रकाश ओम का, क्या जवाब है अनुज? I mean, Modi government is very disciplined as far as fiscal or debt, these things are concerned. तो I mean, I am not surprised कि वो gradually downward जा रहा है fiscal deficit. ये discipline maintain रहे. I wish that. Inflation भी आपका in check है. All the macros are absolutely good. Okay, other than the dollar and rupee equation. So, I mean, long-term impact तो सही है. Direction is right. I think it will stay. राइट। डिफेंस को लेकर काफ़ी चर्चा थी कि बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, बहुत बज़ था डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर प्री बजट वीक में। अभी जो हमें जानने को मिल रहा है वो ये है कि डिफेंस बजट अब 5.94 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है वर्सेस 5.68 लाख करोड़ रुपीस। मतलब कि बहुत बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है आउटले में अनुज, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। मेरी टीम ने डाटा भेजा है 4.9 लाख करोड़ से 5.9 लाख करोड़। ओके, वी विल क्रॉस चेक दैट, बट या इवन देन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं है इन द नंबर। If my number are correct, then it is 20%, which is phenomenal. Okay. Yeah. सो ये एक अच्छा पॉजिटिव थीम है डिफेंस स्टॉक्स के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए ऑल टुगेदर। आप जियोपॉलिटिकल देखिए, मतलब वी आर ऑलरेडी एट वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है। अभी इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ी जा रही है, हो सकता है कल को ग्राउंड पे लड़ी जाए। सो डिफेंस इज समथिंग यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम। राइट। डिफेंस लॉन्ग टर्म थीम मान के चल सकते हैं इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। जैसे हमने प्री बजट डिस्कशन में बात की थी कि इस टाइम पे डिफेंस बजट को कम करना तो चांस ही नहीं है, बट सस्टेन रखना और उसको और बढ़ाते जाना, सो दैट वी हैव अ इन हाउस स्ट्रॉन्गर डिफेंस वेयर विथ ऑल।
तो डेफिनेटली वो एक सेक्टर, और टेक्निकल सेटअप वाइज भी ऐसा है कि वहाँ पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, ट्रेंड इम्प्रूव हो सकता है यहाँ पे। राइट। सवाल आ रहे हैं लगातार। मिलन सर के लिए एक सवाल है स्पेसिफिकली, इज दिस मार्केट फॉल अ रिएक्शन टू बजट 2026 और इट इज बाउंड टू फॉल मोर? प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, बट डेफिनेटली वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग, बट एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सैनिटी आ रही है। इनिशियल नीजक रिएक्शन था जो अगेन आई वुड से वो एसटीटी रिलेटेड स्पेसिफिक था, बट जैसे जैसे लोगों को लग रहा है कि नहीं ये बैलेंस बजट जैसा साउंड कर रहा है, ग्रोथ पाथ पे और एक स्टेप हमको आगे ले जाएगा, ऐसी फीलिंग, ऐसा सेंटिमेंट धीरे धीरे बन रहा है। राइट। एसटीटी पे ही आगे और भी बात करते हैं क्योंकि ये ट्रेडर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एसटीटी को बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 0.02% टू 0.05%। ये ट्रेडिंग कॉस्ट्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अनुज एंड मिलन। मिलन, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट? डेफिनेटली सी हर ट्रेडर यही चाहेगा कि उसके कॉस्ट कम हो, बिकॉज लेसर कॉस्ट इज हायर प्रॉफिट, एंड एन एक्टिव ट्रेडर वुड उसका अच्छा खासा कॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज टैक्सेस। सो उसमें और बढ़त होनी मतलब डेफिनेटली लेसर मनी इन हैंड्स ऑफ द ट्रेडर। मेरे ख्याल से इसको डायरेक्शनल तौर पे भी देखा जा सकता है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मतलब जो रिटेल टाइप का सेगमेंट F&O में बहुत एग्रेसिवली आ रहा था, उसको शायद डिस्करेज करने का, एंड दिस ट्रेंड माइट कंटिन्यू एज वेल। राइट। कैपिटल गेंस में ऐसे ट्वीक की उम्मीद की जा रही थी, जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया था, बट ऐसा कोई मेजर चेंज एलटीसीजी में तो हुआ नहीं। एसटीटी को जबकि बढ़ा दिया गया है, तो अब सवाल ये है कि एफआईआईज को रिटेन भी नहीं, वापस लाने के लिए गवर्नमेंट क्या सब अपना एक्सट्रीम स्टेप ले पाई है या फिर नहीं। एफआईआईज को लेके कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स जो किए गए वो बता देती हूँ अपने व्यूअर्स को। नॉन डेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स अंडर फेमा विल बी रिव्यूड एंड मॉडर्नाइज्ड, ऐसा कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। मतलब कि मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि इंडिया एफडीआई रूल्स को सिंपलर बनाने की कोशिश कर रहा है, मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स और कैपिटल इन्फ्लोज को एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश की गई है। बट क्या ये इनफ है अनुज? नहीं, if you want to bring back FII, I don't think the budget is enough, but the budget is absolutely in the direction and absolutely fulfill the requirement of the Indian economy in current state. Okay. बट FII कोई बैंग अनाउंसमेंट नहीं था, सो बेसिकली FII इज नॉट गोइंग टू कम बैक बेस्ड ऑन दिस बजट। रादर आपका रिटेल इन्वेस्टर भी टाइम लेगा थोड़ा सा, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, बजट का रियल टाइम अनाउंसमेंट डिकोड करना इतना ईजी नहीं है। बट अब इसके बाद क्या होगा, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ये दीज मिनिस्टर्स विल बी ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड इंटरव्यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मतलब इनका इंटरव्यू चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको अंदर का क्रक्स पता चलेगा। मेरे हिसाब से बजट बहुत अच्छा है। अगर आप STT देखते हो जो कि सिर्फ F&O डेरिवेटिव सेगमेंट को अफेक्ट कर रहा है, अगर आप एक कैश मार्केट सेगमेंट को देखोगे तो कैश मार्केट सेगमेंट में आई थिंक द अनाउंसमेंट हैव बीन पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल NRI का जो पार्टिसिपेशन है ना, फॉर एग्जांपल PSU जो रीट इनविट के थ्रू मोनेटाइजेशन का जो अनाउंसमेंट था, तो आई मीन एंड मोस्ट ऑफ द बड़े बजट बिग टिकट अनाउंसमेंट जो है इंडस्ट्री लेवल पे, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक्टिवली उस सेगमेंट की कंपनियां हैं अवेलेबल। तो बेसिकली आई थिंक पीपल विल डाइजेस्ट द बजट, एंड आई थिंक बजट के कारण मार्केट नेगेटिव तो नहीं जाएगा, मतलब अदरवाइज चला जाए तो चला जाए, बट आई डोंट थिंक बजट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। बट यस, FII को प्लीज नहीं करेगा। To attract FIIs at this point, what needs to control more than the budget, what needs to be controlled is the drop in the USD INR. Yes. So अगर वहाँ पे अगर सिचुएशन कंट्रोल में होती है तो डेफिनेटली वी वुड सी सम पॉजिटिव नेट बाइंग एक्टिविटी बाय FIIs. राइट। रुपी को संभालने की ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए इस समय, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बिकॉज अगर हमें FIIs को वापस लाना है मार्केट्स की तरफ। NRIs की आपने बात की, तो उससे जुड़े जो अनाउंसमेंट्स हैं वो व्यूअर्स को बता देते हैं। सो NRIs को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने। ओवरसीज टूर प्रोग्राम से जुड़ा एक है अनाउंसमेंट, 5 to 20% से अब उसको 2% कर दिया गया है विदाउट एनी मिनिमम लिमिट। एजुकेशन एंड मेडिकल रेमिटेंसेस अंडर LRS हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 5% to 2%। तो NRIs के लिए तो एक अच्छा खासा फोकस है फाइनेंस मिनिस्टर का इस बजट पे। क्या रीज़न हो सकता है इसका अनुज? आई थिंक ये सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया है। दिस इज़ नथिंग एल्स बट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए उनको मतलब डे वन पे आउटफ्लो कम करने का इम्पैक्ट है, बट आई डोंट थिंक इट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट. Only thing that would, if more dollars come into India, it will support, dollar, USD INR.
FII को एक फ़ायदा रुपीज़ के डेप्रिसिएशन का भी तो बहुत अच्छा हो रहा है. मतलब अर्लियर अगर आप $1 वो बाहर निकालते हैं देन दे वुड हैव गॉटन 80 रुपीज़, नाउ दे आर गेटिंग 92 रुपीज़. राइट. ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा को लेकर भी कई अनाउंसमेंट्स हैं. मैसिव कनेक्टिविटी प्ले देखने को मिल रहा है इन बजट 2026. 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को अनाउंस किया गया है. एक नया फ्रेट कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के दंकुनी से गुजरात के सूरत तक बनेगा. वेस्ट बंगाल एक पोल बाउंड स्टेट है जैसा कि आपको पता है. शिप रिपेयर इकोसिस्टम वाराणसी और पटना में बनाने की बात की गई है. साफ मैसेज है कि जो रेलवेज, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा, EPCs, ये सब स्ट्रक्चरल बेनिफिशरीज हो सकते हैं इन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. Yes, absolutely. Absolutely. Just imagine the total budget of Ahmedabad to Mumbai high-speed rail corridor. It's more than 1 lakh crore. Yes. So now you have announced 7 high-speed rail corridor. अगर 1 लाख करोड़ ही आप मानो तो 7 लाख करोड़ ये हो गया. ठीक है. Then 25 waterways in next 5 years. Then new dedicated freight corridors from east to Surat. And then I mean इंफ्रा पे आपको अगले 4-5 साल का पाइपलाइन दिखाई दे रहा है इंफ्रा पे. इनफैक्ट यू आर राइट. ये जो पाइपलाइन है वो हेल्प करेगा इन स्टॉक्स को जहाँ पे सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन चल रहा है. फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है बट ग्रेजुअल इन्वेस्टिंग इन कैपेक्स इन दीज सेक्टर्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ दीज कंपनीज विल ब्रिंग इन फ्रेश मनी. राइट. ये वाटरवेज की जो आपने बात किया कि 20 या 25 नए नेशनल वाटरवेज की बात की गई है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में की है. और सवाल एक व्यूअर का आया है कि क्या इससे जो लॉजिस्टिकल पेन है या फिर फ्रेट कॉस्ट्स को लेकर जो पेन रहता है उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा खासकर एक्सपोर्टर्स को? Water transporting goods through water is almost 5 times cheaper than transporting goods by road. So waterways is very essential for the country. I mean, the government is talking about waterways for so long now, maybe over 10 years now. But उतना impact दिखा नहीं. Maybe this budget will have some more focus on it. Right. So I hope we have more waterways very soon. ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा एक लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के रेडार पर रहते हैं और कई सारे ऐसे बिग बैंग अनाउंसमेंट्स हुए हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को लेकर. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा सेक्टर स्पेसिफिकली. स्पेशली व्हाट यू आर सेइंग इज अबाउट द लॉजिस्टिक्स सेक्टर. तो जहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है रिलेटेड टू कंटेनर्स. सो that is an investment in the right direction and it will also reflect stocks related to this particular sector. राइट. बॉन्ड मार्केट को भी लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किए हैं. बिग रिफॉर्म्स हैं. एक क्लियर मैसेज भी है कि इंडिया वांट्स अ डीपर बॉन्ड मार्केट. क्या अनाउंसमेंट्स है वो बता देती हूँ अपने व्यूअर्स को. कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क आएगा जिसमें फंड्स एंड डेरिवेटिव्स बॉन्ड इंडाइसिस पे अलाउ किए जाएंगे. इसके अलावा टोटल रिटर्न स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे प्लस मोर हेजिंग एंड ट्रेडिंग टूल्स भी आएंगे. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को बूस्ट करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए से बड़े बॉन्ड इशू पर 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा अमृत स्कीम के अंडर. तो मैसेज है यहाँ पर क्लियरली कि इंडिया इक्विटी के साथ अपने डेट मार्केट पे भी इक्वली फोकस करना चाहता है. Yes, actually, look, कोई बजट में कोई टैक्स इस बार तो बढ़ाया नहीं है, बट योर स्पेंडिंग इज गोइंग अप. ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्मार्टली विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन द टैक्स पेयर, दे हैव वेरी स्मार्टली मेक वेज टू कलेक्ट लिक्विडिटी फॉर देम. सो बेसिकली आप PSU का मोनेटाइजेशन लो जो रीट इन्वेट के थ्रू होगा या ये जो बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगा इससे, आई थिंक दीज आर ऑल इन दैट डायरेक्शन ओनली. So it is a very balanced budget as far as keeping the expectation of the middle class people of country as well as the industry and business. राइट. सो मिलन, ये जो बॉन्ड मार्केट को लेकर रिफॉर्म्स हैं एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव माना जा सकता है फॉर सर्टन सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल बैंक्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड फंड्स, इवन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स. हो सकता है बट एट दिस पॉइंट नॉट मच क्लैरिटी कि इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है. आई थिंक आने वाले दिनों में ज़्यादा इसका इससे क्लैरिटी मिलेगी. राइट.
यूथ के ऊपर काफ़ी फोकस है फिनेंस मिनिस्टर का। हर साल ही इंडिया का जो यूथ है उसको एड्रेस करने की कोशिश करती हैं फिनेंस मिनिस्टर। इस बार भी उन्होंने कई सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं देश के युवा वर्ग को। मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उनको बता देती हूँ आपको। तो एक तो बात कही गई है इंडिया के ऑरेंज इकोनॉमी को सपोर्ट करने की, जिसमें कि आते हैं एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बात किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेटअप करने का, जो कि मुंबई में सेटअप किया जाएगा और ये फोकस करेगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, यानी कि ABGC सेक्टर को। कंटेंट क्रिएटर लैब्स होंगे 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। मतलब ये जो बूमिंग कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी है उस पर भी FM का ध्यान गया है इस बार बजट में। एक और नया प्रपोजल है, TCS रेट ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम करंट 5% एंड 20% टू अ फ्लैट 2% विदाउट एनी मिनिमम अमाउंट कंडीशन। दिस मीन्स जो ट्रैवलर्स हैं उनको अब थोड़ा अपफ्रंट जो टैक्स वो देते थे वो थोड़ा सा वो अमाउंट कम हो जाएगा वाइल दे आर बुकिंग इंटरनेशनल टूर पैकेजेस। सो यूथ फोकस्ड बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं। कौन सा आपके लिए स्टैंड आउट करता है अनुज? एजुकेशन और टूरिज्म पे जो TCS इन्होंने रिड्यूस किया है, दैट इज समथिंग दैट आई नोटिस्ड। Right. FM has proposed to reduce TCS rate for pursuing education and medical purposes from 5% to 2%. So जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट वर्ग है, युवा वर्ग है, जो नए करियर को एक्सप्लोर करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन, उन सबको सपोर्ट देने की कोशिश की है फिनेंस मिनिस्टर ने। ये एक थीम रहा है पिछले कुछ सालों से, देखा जाए अगर मिलन तो फिनेंस मिनिस्टर ज़रूर कोशिश करती है कि युवा वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हो बजट में। इनफैक्ट हमेशा ही ये गवर्नमेंट का थीम रहा है कि अपस्किलिंग को फोकस किया है और वहाँ पे राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट्स भी हुई है। सो दैट आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट पुटिंग दैट इनटू पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट, बहुत छोटा सा सेक्टर है, ऐसे कोई स्टॉक्स आपको उभर के नहीं दिखेंगे कि इससे इनका बेनिफिट हो जाए। राइट, एक सवाल आया व्यूअर का इसी से जुड़ा हुआ, विल भारत विस्तार AI रियली हेल्प स्मॉल क्रिएटर्स एंड बिजनेसेस और स्टे लिमिटेड टू गवर्नमेंट यूज? सो अगेन इम्प्लीमेंटेशन, अनाउंसमेंट्स तो हो गए बट इम्प्लीमेंटेशन पर अभी भी काफ़ी सवाल है, कंफ्यूजन है। वो मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन के अंदर क्लैरिफाई हो जाएगा कि S2 मतलब रियल इम्पैक्ट किस सेक्टर का क्या पड़ेगा। बट यहाँ पे एक मेजर अनाउंसमेंट हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज़ जो नया इनकम टैक्स एक्ट 25 आएगा, मतलब 19 आई थिंक 64 से है, जो करंट इनकम टैक्स एक्ट है उसमें रेगुलर अमेंडमेंट हो रहे हैं 64 से। इनकम टैक्स एक्ट 1964 चल रहा है। सो नाउ इट विल बी इनकम टैक्स एक्ट 25 फ्रॉम 1 अप्रैल 26। बट अगेन वही इशू वही है कि अभी रूल्स और उसके कितना सिंपल रूल होंगे, कितना सिंपल रेगुलेशन होगा, टैक्सेशन कैसा होगा, दैट इज़ येट टू बी सीन। राइट, तो ये तो एक बड़ा फोकस रहा है FM का व्हेन इट कम्स टू बजट, द यूथ सेक्शन ऑफ द कंट्री। वापस अगर हम आते हैं सेक्टर्स की ओर, तो MSMEs और SMEs को लेकर भी कई अनाउंसमेंट्स किए हैं फिनेंस मिनिस्टर ने। 10,000 करोड़ रुपए का SME फंड है फॉर जॉब्स एंड ग्रोथ, 4,000 करोड़ रुपए का टॉपअप है टू सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड। TREDS प्लेटफॉर्म मैंडेटरी कर दिया गया है PSU परचेजेस फ्रॉम MSMEs के लिए। तो एक तरीके से कोशिश की गई है FM द्वारा कि MSME की जो लिक्विडिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। यस, इसका डिटेल इन्होंने कुछ अभी बताया नहीं है। 10,000 करोड़ का जो SME ग्रोथ फंड है वो डिटेल मेरे ख्याल से जब आएगा तब इंटरेस्टिंग होगा देखना। ऑल्सो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड 2,000 करोड़, अमाउंट तो छोटा दिखाई देता है बट पता नहीं, विल हैव टू लुक इनटू द प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। बट इसमें जो CGT SME में जो इनवाइस डिस्काउंटिंग को कवर किया गया, दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली जो स्मॉल SME और MSME सेगमेंट जो है कंट्री का, उसी को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। एंड आई थिंक द बजट प्रोवाइड एनफ हेल्प टू देम। जो आप सेक्टोरल अनाउंसमेंट भी देखोगे उसमें अधिकतर कंपनियां आपको MSME कैटेगरी की बेनिफिट होती दिखाई देंगी। राइट, डिफेंस को लेकर जो करेक्ट नंबर्स है वो आ गए हैं हमारे पास। सो 22% इंक्रीज है इन द टोटल आउटले। कैसे देखते हैं आप इसको? आई सी इट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शनली, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। उससे ज़्यादा एट दिस पॉइंट एक्सपेक्ट करना भी शायद एक ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। 20% इज़ अ गुड नंबर। ग्रेजुअली आई थिंक दिस विल सिंक इन एंड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन डिफेंस स्टॉक्स because they are already beaten down at this point. Right, Anuj? डिफेंस तो थीम है मैम, डिफेंस इज़ अ थीम दैट हम लोग भी इन्वेस्टेड है डिफेंस थीम में। Right. सो डिफेंस इज़ अ थीम।
पर्टिकुलरली आप जो नए नए एग्रीमेंट हो रहे हैं, आप ये जो टाटा का जो एयरबस के साथ एग्रीमेंट में गुजरात में प्लांट चालू होने वाला है करंट ईयर में, आई मीन आप छोटे छोटे अनाउंसमेंट देखोगे, अभी एम्ब्रियर के साथ अदानी का कोई एग्रीमेंट चल रहा है, महिंद्रा का भी एयरबस के साथ चल रहा है, ये इस बजट में सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ पे भी मेजर फोकस रहा है। तो ये पूरा एरोस्पेस प्लस डिफेंस, आई लुक एट डिफेंस फ्रॉम इंक्लूडिंग एरोस्पेस. So basically, I mean, it's a theme that is going to run for years. राइट, डेटा सेंटर्स को लेकर भी अनाउंसमेंट किए गए हैं और उसकी वजह से जो भी रिलेटेड स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल अनंतराज एक्सेट्रा, वो सब अराउंड 10% तक रैली कर रहे हैं. सो इंडियन डेटा सेंटर लिंक स्टॉक्स में एक शार्प मूव इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक लॉन्ग टैक्स हॉलीडे अनाउंस किया है टू अट्रैक्ट ग्लोबल क्लाउड कंपनीज टू सेट अप एंड सर्व द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया. तो ये जो प्रपोजल है, ये एक टैक्स हॉलीडे देता है अंटिल 2047 फॉर फॉरेन कंपनीज जो भी ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज इंडिया में लोकेटेड डेटा सेंटर्स के थ्रू देती है. तो वेलकम मूव है ये अनुज. ये बहुत ही बड़ा वेलकम मूव है. मैंने आई डू नॉट रिकॉल टैक्स हॉलीडे एवर इन इंडियन हिस्ट्री जो इतने लंबे पीरियड तक के लिए दिया गया. हमेशा 10 साल 15 साल मैक्सिमम मैंने सुना है. जो पहले सेक्शन 80 के अंदर वो टैक्स हॉलीडे वगैरह आते थे, वो सब 10 से 15 साल तक के होते थे. दिस इज टिल 47 यानी कितना 20 प्लस ईयर्स फ्रॉम एयर. सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. और इसमें एक जो वर्ड आपने फॉरेन यूज़ किया ना, दिस इज ऑल्सो सरप्राइजिंग. आई मीन I don't know whether it's a deliberate thing or a slip of tongue kind of thing. क्योंकि I mean you are just giving this tax holiday to foreign companies, entities, yes, not that's what she Indian said, entities. yes. This is something surprising that raises an eyebrow. But yes, India में data center का ecosystem already develop हो रहा है. वो कितना successful होगा वो नहीं पता. But this will ensure that we move toward ensuring the success of Indian data center story. Yes, 100%. मिलन, जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, टेक्नो इलेक्ट्रिक, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, अनंतराज, सब में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है आफ्टर दिस अनाउंसमेंट. और जैसा कि अनुज ने पॉइंट आउट किया कि ये 2047 तक का एक विंडो है जिसको कि एफएम लेकर चल रही है. मतलब कि एक लॉन्ग टर्म थीम भी यहाँ पर स्टैब्लिश हो सकती है. सी यहाँ पे ये हो सकता है कि ग्लोबल कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल AWS, गूगल, Azure, Microsoft Azure एंड ऑल दैट दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम देम. एंड शायद ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 5 to 10 years में, बिकॉज ऑफ दिस वेरी लॉन्ग टैक्स हॉलीडे, India in terms of a data center could become a hub of data for countries in Asia Pac region. So that will suddenly put us in a different league in terms of data centers. No, maybe it can develop as a outsourcing as well. जैसे BPO एक IT इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हुई outsourcing से related. Maybe data center we will be outsourcing the services of data center to Western countries. Right. Maybe not Western countries, but at least the countries in the Asia Pac region. राइट. और इन सब के बीच में मार्केट लगातार चौपी बना हुआ है, उठ रहा है, गिर रहा है. अभी खबर आ रही है कि थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली है, मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है. बट इससे पहले एक शार्प रिएक्शन देखने को मिला सेंसेक्स और निफ्टी दोनों से व्हेन बजट डिसाइडेड टू प्रपोज अ रेज इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स टू 0.05%. सो जाहिर सी बात है ट्रेडर्स को ये बिल्कुल भी पसंद आया नहीं है. यस, वो एक्चुअली ऑप्टिक्स वाइज ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो हो रहा है. बट इन फाइनल डिटेल्स आई थिंक मार्केट के लिए, ब्रॉडर मार्केट के लिए तो पॉजिटिव ही अनाउंसमेंट दिखाई देती है. हालांकि नॉट वेरी मटेरियली, बट यस इट लुक्स लाइक पॉजिटिव. इसमें जो एक और जो पॉजिटिव है ब्रॉडर मार्केट और कैश सेगमेंट के लिए, वो है बायबैक पे जो इन्होंने एनोमिलिटी को किल किया. मतलब पहले बायबैक मच हायर रेट पे टैक्स होता था. नाउ बायबैक विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन एट लोअर टैक्स, लोअर रेट, है ना. तो आपका नॉर्मल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लगेगा इंस्टेड ऑफ 30% काइंड ऑफ अ टैक्स रेट अर्लियर. एक और थीम जो कि हाईलाइट हो रही है वो है अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, वाटर बेस्ड शेयर्स. ये सब में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया था आफ्टर बजट कॉल फॉर डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वॉयर्स. तो अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि टैरिफ से इम्पैक्टेड था. एक बार फिर एफएम ने उस पर फोकस करने की कोशिश की है. डेफिनेटली. राइट. इस पे आप कुछ एडिशन करना चाहेंगे? ये जो थीम है या इसमें मतलब मल्टीपल अनाउंसमेंट्स वर देयर एज फार एज मरीन और सी फूड सेगमेंट इज कंसर्न. जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 3% आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर पाओगे ऑफ योर लास्ट ईयर्स FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री वेरी वेल, लेकिन 1 से 3% किया है तो इट्स लुक लाइक 200% काइंड ऑफ अ जंप. ठीक है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड सेगमेंट टू सी. रीज़न बीइंग नॉट बिकॉज ऑफ द बजट बट बिकॉज ऑफ द
EU deal. Because earlier EU को export पे it was 26% tariff. Now it will go to zero. जीरो, यस। अनुज जी, आपके लिए स्पेसिफिकली एक सवाल आया है। रीट्स और इन्विट्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है एक व्यूअर को, आप थोड़ा अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो डिस्कशन बजट से हट जाएगा। नहीं, सो बिल्कुल रीट quickly, बेसिकली क्या है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है जिसने कोई एसेट, ऑपरेटिंग एसेट डेवलप की, ठीक है। तो रीट और इनविट में क्या है, आप ऑपरेटिंग एसेट अपनी बैलेंस शीट में रखोगे तो वो उसका जेस्टेशन पीरियड 20 साल है, मान लीजिए उसका पेबैक पीरियड 20 साल है, तो 20 साल आपकी बैलेंस शीट बहुत हैवी हो जाती है। आपको अगला प्रोजेक्ट करने के लिए लिक्विडिटी नहीं रहता आपके पास। तो आप क्या करोगे, एक ऑपरेटिंग एसेट को नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट, ऑपरेटिंग एसेट को हाइव ऑफ करके रीट या इनविट के थ्रू आप उसको लिस्ट करा दोगे, वहाँ से आप पैसा रेज कर लोगे, तो आपका बैलेंस शीट लाइट हो जाएगा। यू विल गेट मनी टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट। सो बेसिकली रीट एंड इनविट मतलब वर्ल्ड ओवर तो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया गया एंड इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग। So it brings back liquidity to the infra player and hence and he can build more infra. राइट। एक थीम है व्हेन इट कम्स टू द करंट गवर्नमेंट, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट, औरतों के ऊपर वो हमेशा फोकस रखते हैं, चाहे वो चुनाव हो या फिर बजट हो। तो इस बार भी बजट में विमेन स्पेसिफिक कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट सेटअप करने की बात कही है, जिसको कि बोला गया शी मार्ट। ये कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स होंगे जो कि रूरल विमेन लेड एंटरप्राइजेज होंगे। तो एक उन्होंने ये भी ऐड किया था कि बिकॉज लखपति दीदी प्रोग्राम को इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से जो देश की औरतें हैं उनको हेल्प करना चाहती हैं, उनको ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा सपोर्ट करना चाहती हैं। तो ये भी एक अच्छा मूव है व्हेन इट कम्स टू विमेन ऑफ इंडिया। एक्चुअली आई वुड लुक एट इट एट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप डे वन से देखिए, फ्रॉम डे वन, फ्रॉम सिंस द मोदी गवर्नमेंट हैज़ कम इनटू पावर, इनका फोकस जो है ना वो एकदम राइट सेगमेंट में रहा है। राइट सेगमेंट माने मेट्रो से बाहर निकलिए। अगर आप देखो मेट्रो का क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरा इनकम आज मान लीजिए 10,000 रुपये से महीने का बढ़ता है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मनी बिकॉज मेरे घर में ऑलरेडी सब कुछ है। बट अगर किसी नीचे एकदम टियर 3 टियर 4 या एकदम रूरल एरिया में किसी का इनकम 1,000 रुपये से बढ़ता है, वो 900 रुपये उसमें से स्पेंड करेगा। इन इकोनॉमिक्स टर्म वी कॉल इट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन रूरल एरिया इज मच हायर देन अर्बन एरिया। एंड वी सिटिंग इन अर्बन एरिया वी टॉक ओनली अबाउट अर्बन एरिया, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, वो लार्ज कैप, इसका बात करता है। लेकिन जब डिमांड जो क्रिएट होगा वो रूरल से क्रिएट होगा। सो बेसिकली द बजट हैज लॉट of small announcement, वो क्योंकि since they do not run into lakhs of crore, they do not get that kind of an attention, but there are so many small announcement that will create a demand, that will create a internal demand in the country. राइट। एक और सवाल आ रहा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी कि मैट के बारे में, जो कि रिड्यूस किया जाएगा फ्रॉम 15% टू 14% एंड फ्रॉम 1 अप्रैल मैट विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल टैक्स। एनी कमेंट्स ऑन दिस? वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, समझ में नहीं आया मैम। अच्छा, ओके, ठीक है। Here, I would just like to add in here in terms of prices. IT sector has suddenly turned positive. It is one sector. So हम जो टैक्स ब्रेक की बात कर रहे थे, जो डेटा सेंटर्स में 21 ईयर हॉलीडे, सो IT एंड IT कंप्यूटिंग रिलेटेड स्टॉक्स में यहाँ पे इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड दैट। राइट। एक व्यूअर का एक और सवाल है कि इस बजट 2026 मोर फोकस्ड ऑन 2047 गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर शॉर्ट टर्म ग्रोथ? क्या कहना चाहेंगे अनुज? It sets the foundation for a long-term growth, and in the choppy geopolitical situation, it kind of protects the Indian business, and it try to give a message to the Indian industry and businessmen that government is with you, and you play on a risky ground. आप risk लो, we are with us. It gives this kind of a message to the Indian industry. Yeah, if you ask me, short term, very short term, it may look negative, but medium to long term, it is a step in the right direction. Right. एक सवाल जो लगातार बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं और वो पूछना आप लोगों से ज़रूरी है कि विच सेक्टर विल शो मोस्ट ग्रोथ आफ्टर दिस बजट, या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे आफ्टर दिस बजट? आंसर करेंगे आप अनुज? मैं करता हूँ। माइनिंग, आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो स्टॉक मार्केट के एंगल से होगा, तो जैसे सेमीकंडक्टर बोलने, सेमीकंडक्टर में भी देयर आर लिस्टेड प्लेयर्स। यस, सेमीकंडक्टर, EMS, माइनिंग, केमिकल, टेक्सटाइल. Textile could see a revival of sentiment from here because after EU deal and announcement in the budget, and infra, yeah, I think these. Right.
मिला? See, we are already seeing improvement in the IT prices of the IT stocks. Apart from that, chances are high that automobile, because of some relaxation, some ecosystem benefit will flow to EVs. So automobile sector may be positivity, and apart from that, definitely defense. अगर कोई medium to long term story ढूंढ रहा है तो definitely. Did I miss defense? Yeah, it should have been on the top. एक और है सवाल कि रेलवे स्टॉक्स का क्या होगा आफ्टर दिस बजट। तो रेलवेज को लेकर अनाउंसमेंट्स तो हुए हैं, आउटले के बारे में हम बस पता लगा रहे हैं, बट जो 7 न्यू रेल कॉरिडोर्स की बात की गई है तो ज़रूर एक फोकस तो है ही गवर्नमेंट का इस पे। गवर्नमेंट का फोकस है, बट रेलवे सरप्राइजिंगली स्पीच में तो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं हुआ है। जी, आई डोंट नो, मतलब फुल बजट जब आएगा उसमें देखना पड़ेगा रेलवे का, बट clearly in the speech it was not mentioned. See, in terms of chart setup, railway stocks are consolidating, breakout की ज़रूरत है, but कोई भी investor या trader को ये ध्यान रखना चाहिए थोड़े long term gestation होता है ये सब projects में, so शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है ये, दिस इज मोर फॉर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल्स। राइट, एलोकेशन के बारे में भी बता दूं, गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 2.77 लाख करोड़ रुपीस फॉर द सेक्टर, और जिसकी वजह से रेलवे स्टॉक्स में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो न्यू कॉरिडोर्स की एफएम ने बात की वो तो है ही। तो ये कुछ सवाल है जो कि लगातार आ रहे हैं। सिल्वर के को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं हमारे कमेंट सेक्शन पे। दो एफएम ने कुछ भी कस्टम्स ड्यूटी या सिल्वर स्पेसिफिकली लेकर कोई भी बात की नहीं है। Silver is international. We are the price taker. I mean, nobody knows what will happen. It all depends upon comments coming from White House, I think. Right. सिल्वर को लेकर आपका आउटलुक? सी, हमने सबने देखा है फ्राइडे को जो मैसिव मेल्टडाउन हुआ था सिल्वर में, बट क्लोज होते होते यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस सिल्वर की बात कर रहा हूँ, टेक्निकली अगर कोई चार्ट्स फॉलो करता है 50-day मूविंग एवरेज पे आके सिल्वर ने एक बाउंसअप दिया है। बट एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सिल्वर को देखता है, हिस्टोरिकली जब 1980s में सिल्वर में बाउंस आया था या 2011 में पीक आउट हुआ था, उन दोनों पीक्स के बाद ऑलमोस्ट एक डिकेड तक सिल्वर प्राइसेस वापस ऊपर नहीं गए थे। तो अगर कोई इस पॉइंट पे अगर ये कोई समझ रहा है कि ये मैसिव क्रैश है और आगे भी क्रैश रहेगा, इमीडिएटली बाउंस अप हो जाएगा सिल्वर, शायद ना हो बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, बिकॉज एक डिकेड लगा था सिल्वर को वापस पुराने प्राइस तक आने के लिए। एक और सेक्टर के बारे में हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। सो हेल्थ केयर सेक्टर को एलोकेट हुआ है 1,04,599 करोड़ रुपीस इस यूनियन बजट में। ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का जो एलोकेशन मार्क है वो पार हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर। और सीतारमण जी ने ये भी बोला है कि 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर्स, और ये हॉस्पिटल्स हैं अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स एंड मेट्रोपोलिस। कैसे देखते हैं इसको अनुजा? इट्स अ वेलकम अनाउंसमेंट। अगेन उसके नुआंसेस देखने पड़ेंगे, लेकिन आई मीन अगर गवर्नमेंट इसको फॉर्मल तरीके से एज अ मेडिकल टूरिज्म प्रमोट कर सकती है, देन दैट नथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी हैव इमेंस पोटेंशियल। हमारा जो कॉस्टिंग है मेडिकल ट्रीटमेंट का, दैट इज़ वे चीपर एंड द क्वालिटी इज़ रियली गुड। सो बेसिकली दिस कुड बी अ वे टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इनफैक्ट एक सिंपल एग्जाम्पल है, पीपल चूज टू कम टू इंडिया फ्रॉम यूएस ओनली फॉर सिंपल डेंटल प्रोसीजर्स ऑल्सो, बिकॉज एयर टिकट प्राइसेस आर चीपर देन हैविंग डेंटल प्रोसीजर्स इन यूएस। राइट। एक और चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। सो निलय थलेश्वर जी ने लिखा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर वाज बेयरली मेंशन्ड इन द बजट, शुड द इंडस्ट्री बी कंसर्न्ड और इज दिस अ न्यूट्रल आउटकम? आई थिंक जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए तो आपका जो ट्रेड डील हो रहा है दैट इज़ गुड। येस, बजट इज साइलेंट ऑन दैट। बजट सारे सेक्टर को कैप्चर भी नहीं करेगा। बजट विल कैप्चर ओनली दो सेक्टर जहाँ पे या तो मतलब देर इज़ अ नीड टू टेक एन एक्शन, राइट, है ना। सो आई थिंक जेम्स एंड ज्वेलरी इज ऑलरेडी हैज़ अ गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ EU ट्रेड डील। मे बी वी विल हैव अ ट्रेड डील विद कैनेडा वेरी सून एज वेल। राइट। Nothing at this point from my side on this particular sector. ओके, डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा है। डिफेंस बताइए, डिफेंस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया हो तो एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि डिफेंस का जो एलोकेशन है वो अराउंड 20 या 22% बढ़ा है, और इसको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। अनुज, अगर आप फिर से रिकैप करना चाहेंगे डिफेंस को लेकर, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं।
डिफेंस तो इनएविटेबल है, डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड मतलब फ्रॉम ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस एज वेल। ब्रह्मोस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, देर आर सो मैनी सिस्टम दैट वी आर एक्सपोर्टिंग। इसराइल ने एक तरीके से अपना कई प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटसोर्स एक तरीके से कर रखे हैं इंडियन प्राइवेट सेक्टर को। सो बेसिकली देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन डिफेंस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट एंड आई थिंक पीपल शुड बी इन्वेस्टेड इन दिस सेगमेंट, बट देर इज़ अ कॉशन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियल डिफेंस प्लेयर, क्योंकि हो क्या रहा है कि मतलब डिफेंस में तो ऐसे आइटम भी लग रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो मैन पावर सप्लाई सर्विस भी ले रही है फॉर हाउस कीपिंग पर्पसेज, ठीक है, बट दैट यू विल नॉट कॉल दैट हाउस कीपिंग कंपनी या डिफेंस कंपनी। सो वो वैल्यूएशन कभी कभी मार्केट में ऐसा दिखाई देता है, वो भी 60-70 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सो इन्वेस्टर हैज टू बी कॉशन, बट या डिफेंस इज अ सेक्टर यू वांट टू इन्वेस्ट इन। राइट, अब हम बजट एनालिसिस को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो मिलन लास्ट कमेंट अगर आपसे लेना चाहें, बजट को आप कैसे देखते हैं? इनफैक्ट आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देंगे इस बजट को? Out of 10, I would give it 7.5. बाय। See, as we discussed earlier, not necessarily हर बार डिफेंस और हर बार बजट टैक्स ब्रेक दे या टैक्स बेनिफिट दे, और लास्ट ईयर हमको अच्छा खासा डायरेक्ट टैक्सेस में बेनिफिट मिल चुका है। So in this budget, what I see is medium to long term growth and the vision of that, especially as you were mentioning 21-year tax break, कहीं पे ऐसा पास में हमने देखा नहीं है। So it's a massive, it's more of a visionary budget than a short term feel good. राइट, आप कैसे रेट आई करेंगे थिंक आई एग्री विद मिलन, 7.5 ही दूंगा एंड द रेशनल वुड बी कि 7.5 इसलिए कि कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं था। आई मीन मैं मार्केट का आदमी हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि अगर कुछ मार्केट रिलेटेड अनाउंसमेंट होते, बट वैसा वो मिस हुए इसमें। लेकिन बजट प्रो बिजनेस है, प्रो इकॉनमी है, दैट इज़ फॉर श्योर। बाकी फाइनल डिटेल्स आई थिंक वो मोर इंटरेस्टिंग होगी और मोर पॉजिटिव होंगी फॉर द मार्केट। तो मेरे ख्याल से एक आध दिन जब डाइजेस्ट होगा ये बजट पूरा, एंड द मार्केट विल नॉट फील लेट डाउन। राइट, तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की राय। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ये बजट कैसा लगा? आप आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देते हैं इसको, एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एज सिटीजन ऑफ इंडिया? और थैंक यू सो मच हमारे इस लाइव कवरेज से जुड़ने के लिए, हमारे साथ प्री बजट स्पीच और पोस्ट बजट में जुड़े रहने के लिए। बजट से जुड़े जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो हम लगातार आने वाले दिनों में भी कवर करते रहेंगे, हम इस पर वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपस्टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम बजट से जुड़ा हुआ जो एनालिसिस है वो लगातार जारी रखेंगे अगले कुछ दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।